हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोतीलाल ओसवाल डिस्कवर। आज जानते हैं फार्मा कंपनी एल्केम के बारे में। एल्केम जो गार्नर कर रहा है मैक्सिमम सेल्स फ्रॉम डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन सेगमेंट, जो है 70% ऑफ द टोटल सेल्स। ये काफी वेल प्लेस्ड रहा है टू रीप बेटर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स अगर हम कंपेयर करें उनके पेयर्स के साथ। इनके पास है मल्टीपल लिवर्स टू आउट परफॉर्म द इंडिया फार्मा मार्केट आईपीएम इन द नियर टू मीडियम टर्म। साउंड कंप्लायंस और स्टेडी अप्रूवल्स हेल्प करते हैं टू ऑफसेट द इंटेंस प्राइस इरोजन इंपैक्ट इन द यूएस जेनरिक सेगमेंट। देखा जा रहा है कि एमएनसी फार्मा और प्योर प्ले कंपनीज जैसे एरिस के बाद अब एल्केम के पास है मिनिमल एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल बिजनेस। इनके पास है मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर्स ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 months despite a high base in the past 12 months due to a revival in non-COVID therapies and better MR productivity, that is 14% net addition over the past 2 years, sustained outperformance in chronic therapies and positive impact of WPI, that is wholesale price index, linked price hike in the portfolio under NLEM यानी National List of Essential Medicines, exports जो largely comprised है of the US and other select geographies जो grew at 18% CAGR over the financial year 2016 to 2021. Non-US exports, which is 19% of the total exports, remain on a healthy growth path on better traction in existing products as well as new launches and grew 35% year on year in 9 months of financial year 2022. Given the sustained pace of launches and reducing effect of price erosion in US portfolio, हम expect करते हैं 11% CAGR in overall exports over the financial year 2022 to 2024. इसके अलावा क्रूड ऑयल प्राइसेस के शार्प राइज की वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है टू बूस्ट द ऑलरेडी एलिवेटेड प्राइसेस ऑफ सॉल्वेंट्स इन द नियर टू मीडियम टर्म. This, along with the gradual resumption in key starting materials (KSMs) APIs from China, is expected to keep API prices at elevated levels. The surge in logistics costs में देखा गया है that there is no sign of subsiding. These factors are weighing on Alkem's profitability. Management काफी enhanced efforts ले रहा है to build its chronic therapy franchise and is also well positioned to benefit from cardiac therapy. Alkem ने ऐड किया approximately 1200 medical representatives और MRs over the past 2 years. इन्होंने recently start किए हैं respiratory division with 200 to 250 MRs. कंपनी के पास approximately 14 brands हैं that are clocking more than rupees 100 crore in annual sales and approximately 10 brands with sales between rupees 50 crore and rupees 100 crore. क्योंकि इन्हें customized focus चाहिए on such large brands. ये declutter करते हैं such brands को by adding a new division comprising 200 to 250 MRs. इन्होंने ऐड किए 200 to 250 MRs in chronic therapies to sustain its out performance. इनका MR strength almost double हुआ है from the financial year 2016 to financial year 2022 till date, and the benefit is yet to be fully realized. While Alkem garners maximum sales from acute therapies, इनके पास है multiple growth drivers जो outperform करते हैं IPM यानी इंडिया फार्मा मार्केट को over the near to medium term. हम पॉजिटिव रहेंगे ऑन द बैक ऑफ इट्स सुपीरियर एग्जीक्यूशन डीएफ सेगमेंट में और पॉजिटिव बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन लिंक प्राइस हाइक पर ऑन प्रोडक्ट्स अंडर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स एंड कंसिस्टेंट कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड. हम एक्सपेक्ट करते हैं अ 10% अर्निंग CAGR ओवर फाइनेंशियल ईयर 22 to 24 ऑन द बैक ऑफ स्टेडी आउट परफॉर्मेंस इन द डीएफ non-US segment, the robust pace of launches in the US segment and 110 BP margin expansion. We give buy rating with a target price of rupees 3,870. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.